मैनेज द रिएक्टिव पावर। एक्सपर्ट्स का कहना है टेक केयर ऑफ द रिएक्टिव पावर, द एक्टिव पावर शैल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। हाउ? बिकॉज देयर इज अ गवर्नर, देयर इज अ जनरेटर, large moving masses are there, turbine car very heavy, keeps on moving, so it can accelerate or deaccelerate, and in that process it is able to store the flywheel action. It can store the energy and it can release the energy, both. इतना ज़्यादा नहीं कर सकता है, but it can do some to some extent. If it is more than generator may go out of step, then it becomes unstable. This is up the it can do up to some things, but reactive power में ऐसा कुछ नहीं. It cannot take care of itself. So this is our outline of the presentation. We will first try to understand the reactive power, connection of voltage and the reactive power. Reactive power is closely linked with the voltage, not with the power. Then how to manage the reactive power? Then behavior of the various system elements. लोड का बिहेवियर कैसा है, ट्रांसमिशन लाइन ऑन लोड एंड जनरेटर ऑन लोड. दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टिव पावर, नॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्टिव पावर. एंड हाउ टू कंट्रोल द वोल्टेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ वोल्टेज कंट्रोल. Then we keep using some shunt capacitors, series capacitors. When to use shunt, when to use series, what is the advantage of one over other. And finally, the dynamic compensation, that is static VAR compensation. Okay. Understanding power. ये तो because all of you are electrical engineers, so you know that AC में voltage and currents are not in the same phase. Same phase means an alternating current or systems, voltage and current both have a sinusoidal shape with respect to time. So when voltage goes to the maximum, current does not go to maximum. If the current and voltage move simultaneously, then we say both are in the same phase. एक पहले या एक बाद. Okay. So their vector product is complex. I think ये तो आप सभी को मालूम ही होगा. Vector product is complex and called the apparent power, having two components 90 degrees with each other, real power or active power. This is measured in watts. 500 watt motor or 600 watt motor or 1 horsepower motor. So this is measured in watts. Then there is a imaginary or reactive power. This is measured in watts. Voltage, ampere, reactive. Product of voltage and ampere, reactive. Watt. This is said to be produced. Said to be, ऐसा कोई production नहीं होता है. It is only voltage and current. Both are either leading or lagging. अगर वोल्टेज करंट वेवफॉर्म का पीक पहले आ जाता है तो कहते हैं करंट इज लीडिंग. वो लीड कर रहा है. लीड मतलब मान लीजिए दो आदमी दौड़ रहे हैं, एक आदमी आगे चल रहा है, एक पीछे चल रहा है.
तो क्या कहेंगे, ये लीड कर, is leading. So if the current is leading the voltage, voltage is the reference, then it is leading, and if the current is lagging, then it is lagging. That lagging means पहले वोल्टेज का पीक आता है, उसके बाद करंट का पीक. So when the current waveform leads the voltage waveform, we call it a leading power factor, and reactive power is said to be produced. हम कहते हैं reactive power पैदा हो रही है. When current waveform lags behind the voltage waveform, lagging power factor, then we say reactive power is consumed. So reactive power is produced or consumed, but it is all imaginary. Nothing is produced, nothing is consumed. This is the voltage waveform and current waveform. You can say this is the angle phi by which there is a lead or lag. In this thing, if this voltage waveform is red, current waveform is blue, so this is which is leading, किसका पहले आ गया, voltage पहले आ गया, voltage is reaching the peak first. दो आदमी अगर दौड़ेंगे तो वोल्टेज पहले पोस्ट में पहुंच जाएगा और करंट उसके बाद में पहुंचेगा. कितनी देर बाद पहुंचेगा, वो यहीं से पता चल जाएगा ये जीरो कहां से स्टार्ट हुआ. by an angle phi, it can be anything between 0 and 90 degree. So this is. What about the power? Power, we say it is multiplication of voltage and current. अभी यहाँ पर आइए, voltage is 0, current is something x, but product of 0 with somebody is 0. So power is this black 0. फिर ये voltage पॉजिटिव है और करंट नेगेटिव, 0 is here. तो पावर इज नेगेटिव. फिर यहां पर एक करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव हो गए, बोथ आर पॉजिटिव नाउ, सो पावर इज पॉजिटिव. देन वोल्टेज बिकम्स नेगेटिव, सो पावर इज नेगेटिव. व्हाट डज इट मीन, वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव. पावर का क्या हुआ, हमको तो पावर से मतलब है. हमको बेसिकली मैंने फैन लगाया है किस लिए, उसको चलाने के. आई वांट रियल पावर. रियल पावर डज द वर्क. वर्क इज डन बाय द रियल पावर. सो व्हाट हैपेंस टू माय रियल पावर? रियल पावर इज दिस ब्लैक पावर. इट्स ए रियल पावर. अभी तो ये नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया. अगर मान लीजिए एंगल 90 डिग्री हो जाता तब तो ये साइनोसॉइडल होता, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा. सो पावर इज 0. इफ दिस एंगल वुड हैव बीन 0, then both are going to positive simultaneously and becoming negative simultaneously, then power will be always positive and that will be the maximum power. इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव इतना देर तक पॉजिटिव, इतनी देर तक नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स व्हाट, क्या मतलब, लॉसेस नहीं, इट इज बेसिकली सिंपली इनफ्लक्चुअस पावर सप्लाई फ्रॉम जनरेटर टू लोड एंड लोड बैक टू जनरेशन. जब नेगेटिव होता है तो वो पावर को डिलीवर कर देता है. हाँ, वो मतलब इट इज सप्लाइड बैक टू द सिस्टम.
इंडक्टर और कैपेसिटर पावर इंडक्टर कैपेसिटर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल पावर की बात कर रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स कंफ्यूज कर देता है, तो आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ practical person. Okay. So complex power is real power in square, the root of real power is square and reactive power is square, and power factor is the cos phi. What we have seen, if this cos phi, this phi is 90, then what happens? Real power becomes 0. Cos of 90 is 0. So there is a transfer of power from generation to the load and load to system to the fan and fan back to the system. Net result, nothing. So what is the physical significance? Basically, if reactive power is a circulating power which does no useful work, कोई useful काम नहीं करता, it cannot move your fan, it cannot move your machine, it cannot run your mixer grinder, it cannot run your heater, it cannot do anything, does no useful work. And what does it do? It is required to set up the electromagnetic and electrostatic field. Unfortunately, in the AC system, this fan will not work till there is an electromagnetic field. You need an electromagnetic induction. And electromagnetic induction to take place, there has to be a magnetic field. Magnetic field is set up by apparent. वो कोई यूजफुल वर्क नहीं है, बट विदाउट दैट वर्क यू कैनॉट वर्क. वो फैन ही काम नहीं करेगा, आपका मिक्सर भी काम नहीं करेगा, कुछ भी काम. सो यू रिक्वायर electromagnetic field or electrostatic field depending upon application to application. Okay. So this results in reactive energy storage in the system elements. अब इसमें एक कॉइल है फैन के अंदर, है ना कॉइल? When you just supply the energy, फैन को अभी मान लीजिए चल नहीं रहा है, just supply, it's not rotating. क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सेटअप हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई, बट इट इज नॉट रनिंग. वो एनर्जी कहाँ चली गई? इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट, इट इज स्टोर्ड इन द कॉइल. दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. हैड देयर बीन ए कैपेसिटर, देन इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. So this has a very strong effect on the system voltage and must be balanced in the grid. इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये वोल्टेज से बहुत ही स्ट्रांगली रिलेटेड है, और वोल्टेज को ये जिस तरह से जो एक्टिव पावर है वो फ्रीक्वेंसी से लिंक है, reactive power voltage. Excess of reactive power will increase the voltage
and deficiency of the reactive power will result into under voltage being lower than what is desired. So this has to be balanced in all the places in the grid. जनरेटर से लेके लोड तक हर जगह ये बैलेंस होना चाहिए at all the times. सुबह दोपहर शाम, in the microseconds, milliseconds, it has to be balanced. Otherwise, there will be some voltage problem. Like the frequency linked with the speed and power, real power, voltage is linked to reactive power. That means that how voltage is related to reactive power. Voltage and the reactive power. आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे. My outline is going in that direction. ये एक वो curiosity है, it has to be followed. So few facts is there. Reactive power is closely linked to the system voltage. Excess leads to the over voltage. Deficit leads to under voltage. Why it happens? Mainly because it doesn't travel without a voltage drop. Active power के travel करने के लिए क्या चाहिए? Phase angle, delta. और reactive power को travel करने के लिए क्या चाहिए? Voltage magnitude. So, if you have excess means extra, which is to be transmitted to some other thing, so this voltage has to be higher. Then only it can travel. Difference of voltage per travel करेगा. So it doesn't travel without a voltage drop. So ideally, load requirement should be met locally. ये फैन है, इसको कुछ रिएक्टिव पावर चाहिए. क्यों चाहिए? इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए. तो जब हम मार्केट से खरीदने जाते हैं तो देखते हैं इसका पावर फैक्टर क्या है. देखते हैं नहीं क्या देखते हैं? ब्रांड देखते हैं. पावर फैक्टर जितना हाई होगा सिस्टम में रिएक्टिव पावर उतना कम होगा. तो ये जो गुड परचेजर है वो लोग सिर्फ पावर फैक्टर, बाकी लोग सिर्फ पैसा देख के खरीद लेते हैं. तो कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगी है, बट दे डोंट लुक एट द पावर फैक्टर